पे करना है, सेकंड इंस्टॉलमेंट 31 मार्च 2008 पे करना था, एंड थर्ड इंस्टॉलमेंट 31 मार्च 2009 पे करना, 3 इंस्टॉलमेंट पे करना था। ये पे कर लिया, यहाँ डिफॉल्ट हो गया, तो यहाँ डिफॉल्ट पैसा नहीं दिया, सो एसेट को वापस लिया, सो डिफॉल्टेड इन द सेकंड इंस्टॉलमेंट एंड एसेट वाज repossessed. Now we have to make the entries in the books of hire purchaser and hire vendor. कैसे बनाएंगे? Okay. Question number 12. The books of hire purchaser, rapid engineering limited. The asset account, what was the asset? The asset was, asset क्या है यहाँ? Asset है, क्या purchase किया है? Machine. Okay. Okay. Industries. And vendor report. Okay. So first entry क्या होता है? क्वेश्चन बुक से करवा रहे हैं ये तो आपसे, यार व्हाट इज दिस? ये पहली बार आ रहा है क्या नवनीत? आपको असाइनमेंट भेजा हुआ है, ठीक है, आप जो भी है एडमिन उनसे आप बात कर लीजिए, आपको व्हाट एवर द डाउट वो क्लियर करेंगे। पहले से ही आपको भेजा हुआ है असाइनमेंट, तो उससे हम कर रहे हैं, ठीक है। ओके, फर्स्ट एंट्री 1/4/2006 we have purchased, so machinery account debit to hire vendor, so rapid engineering, account कितना है अमाउंट यहाँ बताया है 31,360 is the cash price, so 31,360 the cash price आ गया, so 1/4/2006 by asset account machinery account 31,360, ये हो गया। तो सेकंड क्या है? डाउन पेमेंट। भाई डाउन पेमेंट हुआ है?
A sum of rupees 9,000 was paid at the time of delivery. So down payment is 9,000. So we can create higher vendor account debit to bank. ये है 9,000 डाउन पेमेंट. 1,4,2006 हो गया. Then तीसरा है due for depreciation. So depreciation account debit to asset account. We are like by depreciation 31st to March 2007 पे क्या है depreciation 10% diminishing balance method. तो ये हो जाएगा 316. ड्यू फॉर इंटरेस्ट. इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट करना है? फर्स्ट मार्च 2007. इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट. ये इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट. सो ये हो जाएगा बाय इंटरेस्ट. तो कितना है आपका टोटल था 31,360 था. उसमें से डाउन पेमेंट 9,000 कर लिया है. बाकी बच गया है आपका 22,360. तो इस अमाउंट का ऊपर आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है 10%. ये हो गया 2236. ठीक है. सो 2236 क्या सही नहीं नहीं का मतलब क्या है? So this is the first year interest. 36. Then payment of installment. What will be the entry? Entry क्या होता है? Payment of installment. Entry will be higher vendor account debit to bank. So 31st March 2007 पे. So कितना ये कर रहा है paid? The balance was payable in 3 equal annual installments of 9,000 each. तो यहाँ 9,000 पे किया. First installment payment हो चुका है. तो फर्स्ट ईयर सारे एंट्रीज हो गया है. क्लोज कर दीजिए. क्लोज करिए. 31360 31360. बैलेंस कितना होगा? 31360 माइनस 31360. बाय बैलेंस कैरी डाउन. कौन सा तारीख? and next year 1/4/2007 to balance brought down. कितना होगा? 28,224. This is the opening balance of machinery account and the next year. इसको close कर दीजिए. You will be getting what is the outstanding for the higher vendor. 31260 plus 2236 हो गया 596 minus 18,000 15,596 21st 2007 to balance carry 1/4/2007 by balance brought down 15,596. ठीक है. नाउ जो हम पहले में लिखा हूं इसको आप जरा एक पेपर पे लिख दीजिए. कारण है ये जो स्टेप्स फॉर रिपोजिशन है विद द बुक्स ऑफ हायर परचेसर, उसमें थोड़ा सा भी गलती होगा तो रॉन्ग प्लेस पे चले जाएगा. ठीक है. तो आप इस स्टेप में लिखा इसको आप देख लो. क्या है? पास एंट्री फॉर डेप्रिसिएशन, पास एंट्री फॉर इंटरेस्ट, क्लोज वेंडर अकाउंट and close asset account, transfer the balance to P&L account. यही था. ठीक है. तो हम इसमें टाइम फॉलोइंग द स्टेप्स. फर्स्ट क्या है? पास एंट्री फॉर डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट. P for depreciation. Depreciation account debit to asset account 31st March 2008.
How much? 10% WDU method, so 28W. Pass entry for due for interest. Interest account debit to higher vendor. By interest 15,596 into 100. ये है आउटस्टैंडिंग अमाउंट, इसका ऊपर हम कैलकुलेट करेंगे. सो ये हो गया है 1560. पेमेंट करना था 9,000 लेकिन नहीं किया है, therefore the asset will be repossessed. So what was the third step? Close higher vendor account. Close higher vendor account and transfer the entire balance to asset account. इसको close कर लीजिए. 17156. Transfer entire balance to asset account. So to machinery account. जितना भी पूरा वैल्यू ट्रांसफर टू asset account 16156 31st March by rapid remaining account 17156. Now close the asset account. You will be getting the loss. So close for the 28, 28, 28, 28, minus 2833 minus 17156. The loss is 3246. You are getting the loss. Six. Right? Profit and loss. Okay, done. Okay. So where we have started with the step one. Step one is the pass entry for due for depreciation. Step one. Step two क्या था? Pass entry due for interest. Step two. Then तीसरा entry था close asset account and transfer entire balance to close higher vendor account and transfer entire balance to asset account. So ये तीन है. फिर close asset account, you will be getting the balancing figure, that is the loss. The loss will be transferred to profit and loss account. ये था step 2. Okay, these are the 4 steps. And लोग क्या करते हैं, पहले asset account को close कर लेते हैं. Asset account close करके यहाँ आएगा. Then you will be getting the profit and loss account is the loss is due to repossession of the asset. So we cannot transfer the loss entry cannot come in the higher vendor account. तो गलती हो जाता है, इसलिए steps आपको लिखवाया. Pass entry for depreciation, due for depreciation. Pass entry for due for interest. Close asset account, higher vendor account. Transfer the entire balance to asset account. Close asset account. Whatever the left out balance is there, that is the loss which will be transferred to profit and loss. ये है ये 4 step. किसी का कुछ problem? Anybody is having any problem? Are you getting? No. क्या समझ में नहीं आ रहा है बताइए लोकेश. No doubt. अच्छा. हाँ जी, everyone is getting? Okay. Devin? Okay, clear. Departure. Very good. I hope everybody is getting. तो मैं आगे
बढ़ रहा हूँ, ठीक है। राइट, प्रॉब्लम नंबर 13। प्रॉब्लम नंबर 13 क्या है? 1st April 2007, Singh acquired a truck from a dealer on hire purchase basis. Cash price which was rupees 8 lakhs. The terms of payment being rupees 2 lakhs cash down. Sorry, friends. Rupees 2 lakhs down payment. First installment 2 lakh 45,000 at the end of the first year, and rupees 2 lakh 30,000 at the end of the second year, and 2 lakh 50,000 at the end of the third year. The dealer charged interest 7.5%. Singh depreciated the truck 10% per annum return to value method. After having made the down payment and having paid the first installment on 31st March 2008, he could not pay the second installment 31st March 2009. The hired vendor took possession of the truck, and after spending rupees 20,000 on repairs on the truck, sold it away for rupees 4,57,500. Further ledger accounts to the books of both parties. अभी दोनों पार्टी पे हम एंट्री बनाना है. So how we have to do it? Let's चलिए राइट. तो फर्स्ट कौन सा अकाउंट हम बनाना है? दो अकाउंट ही बनाना है. एक तो असेट अकाउंट, दूसरा है हायर वेंडर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हायर परचेसेस. हायर परचेसेस में हायर परचेसेस इज सिंह, मिस्टर सिंह. यह है परचेसेस. इनका बुक पे कौन सा अकाउंट बनाना है? ट्रक अकाउंट, असेट अकाउंट बनाना है. असेट इज सेकंड ईयर पे डिफॉल्ट हो रहा है, ठीक है. हायर वेंडर अकाउंट. ये भी हो गया हायर वेंडर अकाउंट. इज द हायर वेंडर फ्रॉम द डीलर, ट्रक ऑन a dealer. We don't know who is this. Simply आप लिख दीजिए हायर वेंडर करके, क्योंकि हायर वेंडर का नेम इज नॉट गिवन इन द प्रॉब्लम. सो हायर वेंडर अकाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, रुपीज, डेट, पर्टिकुलर्स, रुपीज. असेट अकाउंट पे डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीज, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट. ओके. कैश प्राइस दिया है प्रॉब्लम पे. सो कोई प्रॉब्लम नहीं, सीधे हम जा सकते हैं प्रॉब्लम के लिए. व्हाट इज एंट्री? फर्स्ट एंट्री, delivery of asset, purchase of asset, asset account debit to hire vendor account, truck account debit to hire vendor account. Hire vendor account. कितना है? कैश प्राइस 8 lakhs. कौन सा तारीख है? 1st April 2007. Immediately come to hire vendor account 1/4/2007.
by asset 8 lakhs. फर्स्ट एंट्री हो गया. सेकंड एंट्री किसके लिए है? सेकंड एंट्री इज फॉर डाउन पेमेंट. डाउन पेमेंट का एंट्री क्या होगा? हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक. हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 2007 डाउन पेमेंट. कितना पे कर रहा है? The terms of payment being rupees 2 lakhs down payment. ये 2 लाख पे. फिर तीसरा एंट्री क्या है? तीसरा एंट्री है ड्यू फॉर डेप्रिसिएशन. So 31st March 2008 by depreciation. Depreciation account debit to asset account. What is the rate of depreciation? Dealer charge interest 7% and 10% is the depreciation per annum return to the. इसको ऊपर आ जाएगा 80,000. ठीक है. ड्यू फॉर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट. सो बाय इंटरेस्ट ये तो 6 लाख हो गया. 8 लाख था, उसमें से 2 लाख पे कर लिया है. द प्रिंसिपल अमाउंट आउटस्टैंडिंग इज 6 lakhs on that 7.5%. How much is this? 6 lakhs 7.5% is 45,000. Yeah. Then payment. Higher vendor account debit to bank. Installment taken. On first installment, they have said 2,45,000 is paid. 31st March 2008. सारे इंटरेस्ट खत्म हो गया है. क्लोज द अकाउंट्स. 8,45,000 तो बच गया है 4 लाख. तो बैलेंस कैरी डाउन. One 4.2%. My balance brought down. चलो उसको क्लोज कर लीजिए. 8 lakhs. 8 lakhs. Balance is 7,20,000. 7 लाख 20,000 बैलेंस. कैरी फॉरवर्ड कर लीजिए. बाय कैरी फॉरवर्ड टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 7 lakh 142,000. हो गया. फर्स्ट ईयर हो गया. सेकंड ईयर again due for depreciation. That is the first entry. So depreciation account debit to asset account. So by depreciation 10% return down value method. So opening balance का 10% 72,000. 31st March 2000. 31st March 2000 no 2009. Due for interest. Due for interest का entry क्या है? Interest is expense for us. Therefore it is to be debited. Interest account debit to higher vendor account. So by interest account on 4 lakhs 7.5%. कौन जाएगा? 30,000 4 lakhs into 7.5%. हाँ 30,000 हो गया. Now this amount is not paid. So what will happen? The asset will be repossessed. So अभी हम स्टेप फॉलो कर रहे हैं. Close higher vendor account. Closed. कितना है बैलेंस? 4,30,000. 4,30,000. So to transfer the balance, entire balance to asset account. ये है to track account. 4,30,000. 31st March को आ जाएगा by higher vendor account. 4,30,000.
Let's close asset account and transfer the balance to P&L. Close the asset account, transfer the balance to P&L account. That will be the loss. 7,20,000, 7,20,000. कितना है बैलेंस? प्रॉफिट ऑन लॉस लॉस एंट्री पोजीशन ही आता है. 7,20,000 minus 72,000 minus 4,40,000. ये हो गया 2,18,000 is the loss. ये है बैलेंसिंग फिगर है. Getting this? Getting it? समझ में आ रहा है? रिस्पॉन्ड तो कर लो भाई. इतना पता तो था. अच्छा, एक बार 2009 का 2009 पे क्या क्या एंट्री आएगा? 2009 पे हर साल पे 2009 पे आता है ड्यू फॉर डेप्रिसिएशन एंट्री हम बना दिए. सेकंड स्टेप है ड्यू फॉर इंटरेस्ट. ये भी तो कर लिया, 30,000 आ गया. देन पेमेंट करना है लेकिन पेमेंट नहीं किया, सो रिपोसेशन ऑफ गुड्स. रिपोसेशन आ जाता है. तो रिपोसेशन का एंट्री क्या आएगा? वेंडर अकाउंट डेबिट टू गुड्स रिपोसेस्ड अकाउंट. फिर लॉस ऑन रिपोसेशन फाइंड आउट करना. एसेट अकाउंट कर लीजिए, आपको बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट सेल पे आएगा. देन यू गेट द लॉस ऑन रिपोसेशन. ठीक है, राइट. लेट अस गो फॉर द बुक्स ऑफ हायर वेंडर. So वेंडर तो कौन सा अकाउंट वी हैव टू मेक? हायर परचेज अकाउंट. हायर परचेज अकाउंट एंड गुड्स रिपोसेस्ड. ये दो अकाउंट बना है, हायर परचेज अकाउंट एंड गुड्स रिपोसेस्ड अकाउंट. This is particulars. Date particulars. Okay, right. This interest entry. Mukesh, do you have any problem with interest? कौन सा प्रॉब्लम? पिछले प्रॉब्लम पे 8 लाख था, 2 लाख पे कर लिए, बच गए 6 लाख. उसका ऊपर 7.5% इंटरेस्ट है. और इस प्रॉब्लम पे ओपनिंग बैलेंस 4 लाख है, उसका ऊपर इंटरेस्ट है 7.5%. ये है सेम डेट पे प्रिंसिपल अमाउंट पे कर दिया. 8 लाख ट्रक खरीदा था, उसी टाइम पे 2 लाख पे कर लिया, बच गया 6 लाख फर्स्ट ईयर. तो उसका ऊपर इंटरेस्ट था
सेकंड ईयर 4 लाख आउटस्टैंडिंग है, उसका ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट. Now go for this problem. So how much? Yeah. In the books of higher vendor we have to do it. So what is the entry first? Sales. अच्छा ठीक है. Right. अभी हायर वेंडर बुक में हम एंट्री करना है. हायर वेंडर में सो फर्स्ट एंट्री क्या है? सेल्स के लिए आएगा. सो सेल ऑफ असेट. असेट नहीं, इनके लिए गुड्स है. सेल ऑफ गुड्स. तो क्या एंट्री आएगा? हायर परचेज अकाउंट डेबिट टू हायर सेल्स. कौन सा अमाउंट आएगा? यहाँ फुल कैश प्राइस आएगा. कैश प्राइस इज 8 lakhs. डेट ऑफ परचेज इज 1st April 2007. हो गया. सेकंड, रिसीविंग द डाउन पेमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेज अकाउंट. ये है डाउन पेमेंट. डाउन पेमेंट कितना है? डाउन पेमेंट इज 2 lakhs. ओके. एंड ऑफ द ईयर ड्यू फॉर इंटरेस्ट. तो क्या एंट्री होगा? ड्यू फॉर इंटरेस्ट. कितना इनकम फॉर किससे मिलना है? हायर परचेसर से मिलना है. सो एंट्री विल बी हायर परचेज अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट. इनकम इज टू बी क्रेडिटेड. सो टू इंटरेस्ट अकाउंट. कितना इंटरेस्ट? 6 लाख का ऊपर 7.5%. ये है 45%. फिर इंस्टॉलमेंट मिला है 2,45,000. इज रिसीविंग द पेमेंट ऑफ 2,45,000 फ्रॉम द हायर परचेसर. सो एंट्री विल बी हायर परचेसर अकाउंट डेबिट. बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेसर. सो बाय बैंक 2,45,000. So 21st March 2000 खत्म हो गया. फर्स्ट ईयर का एंट्री क्लोज करिए. ये हो जाएगा आपका 8,45,000. 8,45,000 minus 4,45,000. So the left out balance is 4 lakhs. Balance carried down 142,008. The balance brought down 4 lakhs. So end of the year due for interest, second year end of the year due for interest, entry will be interest is income for inflow, interest is to be credited. So higher purchase account debit to interest account. How much? On 4 lakhs, 7.5%. That is 30,000. End of the year, this entry is passed. Okay. And he is not getting the installment. Again, installment मिल रहा है तो entry will be higher bank account debit to higher purchase account. But यहाँ तो installment नहीं मिला है. Therefore, he is repossessing the goods. Entry will be goods repossessed account debit to higher purchase account. So buy goods repossessed. 4,20,000. Repossessed account पे to higher purchase account. 4,30,000. एक साल खत्म हो गया, इसको क्लोज कर दीजिए. 4,30,000. इसके बाद क्या बता रहा है उन्होंने? ये बता रहा है उन्होंने एक्सपेंसेस इंक्लूड किया. हैविंग डाउन पेमेंट पेड, having paid the first installment 31st March 2000, could not pay the second installment on 31st March 2009. The hire vendor took possession of the track and spent rupees 20,000.
सो रिपेयर के लिए क्या एंट्री है? गुड्स रीप्रोसेस्ड अकाउंट डेबिट, कैश या बैंक कुछ भी लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड राइट बैंक दैट विल बी मोर। सो बैंक अकाउंट कितना है? 20,000। डेट मालूम नहीं है, क्वेश्चन मार्क है। And this truck was sold for 4,57,500. This truck was sold for 4,57,500. Entry will be sale के लिए क्या एंट्री होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू गुड्स रीप्रोसेस्ड। 4,57,500। ओके, ये भी तो डेट मालूम नहीं, क्वेश्चन मार्क। फिर बाद में क्या है? प्रॉफिट मिल रहा है 7,500 इज द प्रॉफिट। गुड्स रीप्रोसेस्ड अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस 7,500 क्योंकि डेट मालूम नहीं है। So this is all the things you have to do it in the books of hire vendor. Hire purchaser account and the goods repossessor account. These are the two accounts we will be preparing in the books of hire vendor. Okay, got it? So we will go for the next problem. (14). Let's go for the problem number 14. सबको समझ में आ गया? आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। Shall I go further? Shall I go further? Now we are in the problem number 14. ये भी full reconstruction का question है। Read the problem. The machinery is sold on hire purchase. The terms of payment are 4 annual installments of 6,000 at the end of each year. Commencing from the date of agreement, interest is charged 20% and is included in the annual payment of 6,000. Show the machinery account, hire vendor account in the books of the hire purchaser to defaulted the payment for third year. The payment were upon the 10% per annum WDV. All the workings should be part of your answer. क्या नहीं दिया है? क्या नहीं दिया है? We need cash price. We need cash price. Cash price इस प्रॉब्लम पे नहीं दिया है। ओके आयुष, क्या डाउन पेमेंट? डाउन पेमेंट भी यहाँ तो है। डाउन पेमेंट तो है 2,000, 2 लाख। आई एम नॉट गेटिंग इट नवनीत, क्या डाउट है आपका? चलिए राइट। Problem number 14. What is not the cash price is not the that we have to find out. Okay. First, let us calculate what is the cash price. Calculation of cash price. कितना इंस्टॉलमेंट है? 3 installments. The terms of the payments are 4 installments. T. Yes.
details amount. Type 3 adjustment type. Type 3 case 1. When the installments are constant. Installments are constant. Okay. So fourth installment कितना है? Fourth installment was हर installment 6,000 पे कर रहे हैं. Fourth installment 6,000 plus interest for year 4. 20% इंटरेस्ट करके बोला है. इंटरेस्ट इज चार्ज 20%. तो ये हो गया है इंस्टॉलमेंट. प्रिंसिपल अमाउंट 100%, इंटरेस्ट 20%, 120. 20% कितना है? तो ये हो गया 1000. ओपनिंग बैलेंस कैश प्राइस ऑन ओपीएल कब होगा? ये तो साल नहीं दिया है. ओपनिंग बैलेंस ऑफ सीपी ऑन ईयर 4 विल बी 5,000. ठीक है. फिर ऐड थर्ड इंस्टॉलमेंट. थर्ड इंस्टॉलमेंट भी 6,000. टोटल 11 लाख less interest for year 3 11 lakh divided by 120. कितना आएगा? 11 lakh divided by 6 is 1833. So outstanding cash price at the beginning of year 3 9 lakh 167. Add second installment. Second installment भी 6,000. Okay. Five, 1, 6, 7. Less interest for year 2. 15,167 divided by 120. 15,167 6 is 2528. 2528. So balance. This will be the outstanding cash breaks at the beginning of year 2. So, 1,567 plus 252. So, yeah, 12,639. And first installment. Less interest for year 1. 18639 18169 30. Outstanding cash price beginning of year 1. 18639 minus 3028 is 15,611. Add down payment. Down payment भी 6,000 है. The terms of payment are annual installment 6,000 each year from the date
We meant the interest on inclusive fund पेमेंट of 6,000. तो यहाँ पर डाउन पेमेंट कुछ भी नहीं दिया है. डाउन पेमेंट तो कुछ भी नहीं दिया है. जाएगा नहीं. So क्या है? यहाँ का कैश फ्लो 15,600. ठीक है. एनी डाउट इसमें? हम पहले भी किया है ऐसे प्रॉब्लम. राइट. अभी हम प्रॉब्लम के लिए जाएंगे इसमें. In the books of hire purchaser, we have to do the entry. Hire purchaser name is not given. Hire vendor का नाम भी नहीं दिया है. In the books of कौन सा अकाउंट we have to make two accounts. One is asset account. दूसरा है hire vendor account. These two accounts you have to prepare in the books of the hire purchaser. There also date, thickness, rupees, pay, hire vendor account. And the first one is the asset account. What is the asset? Machinery. Okay, सब हो गया. Right. Let us go for the entries. First entry, purchase of asset account debit to hire vendor. This is happening on first year. To hire vendor account. How much the cash price? 15,600. 15,600 by machinery account. First. कैलकुलेशन पे कोई गलत तो नहीं? 7,000 6 6 7 9 6 7 6,000 6 2 6 6 3 6 3 9
Sorry, here it is not 30, 1, 8, 16, divided by 6 is 3106. थोड़ा सा गलती हो गया यहाँ. This is 3107. So this is 1552. 1, 5, 5. So amount will be 15532. Only 155. So the first entry is over. Is there any down payment? There is no down payment. तो entry छोड़ दीजिए. End of the year due for depreciation. So 31st, whatever the date is. First year end by depreciation. Depreciation कितना है? 10% per annum WDU method. So 10% on this is 155. Due for interest, interest account debit to higher vendor account. So by interest. First year का interest कितना है? We already calculated. First year का interest है 3107 is the first year interest. Okay, 3107. Payment. Higher vendor account debit to bank. 6000. बस खत्म. क्लोज कर लीजिए. One eight sixteen. minus 6000, 12,600. That is balance carried down. The first year, we do know the date. First year. Second year, high balance brought down. 1263. So say 15532 minus 1553. One four. Complete answer.
sorry. The is default is happening, so the goods are repossessed by the higher vendor. Plus 1833. So when asset trade balance transfer to asset. Those the balancing figure will be the loss on repossession. इसको close कर दीजिए 12581 12581. So 11,000 plus 11 258 is 12581 minus 1258 is 323 is the loss. I profit and loss. Loss is the loss. So this is what we have to do it. I hope now full repossession आप सब लोगों का समझ में आ गया होगा. Am I right? समझ रहा है अभी? Okay. Okay. Anyone has any doubt? कोई भी किसी का डाउट? दीपांशु आपको समझ में आ गया या नहीं आया? Clear. बढ़िया. Right. Now let us go for the partial repossession. Whatever till now we have done, ये आने का चांसेस वेरी वेरी रिमोट. जो अभी करने वाला है वही आएगा एग्जाम पे. लेकिन अगर इतना नहीं किया है तो हम वो समझ नहीं पाएंगे. इसलिए मैं 3-4 प्रॉब्लम इसको किया है. Let us go for the partial repossession. Go for the problem number 19. Problem number 19. Entry वही है, no difference, but calculations और थोड़ा सा different होगा. Question number 19. Partial repossession. तो partial repossession very important. ऐसे प्रॉब्लम्स आपको आता है. ठीक है, राइट. तो फर्स्ट आप अकाउंट बना दीजिए. किसका बुक पे पूछ रहा है? फर्स्ट रीड द प्रॉब्लम. X company limited purchase from Y company limited 3 machines costing 1,50,000 each on hire purchase system on 1/1/2007. Payment was to be made 90,000 down and the remainder in 3 equal installments on 31st December 2007, 31st December 2008, 31st December 2009, together with the interest of 9%. X company writes depreciation at the rate rates of depreciation at the rate 20% on reducing balance method. X company paid installment due at the end of 31st December 2007 could not make on 31st December 2008. Y company agreed to leave one machine with a purchaser on 1/1/2009, adjusting the value of the 2 machines. इनमें एक मशीन को जोड़ रहा है, 2 मशीन को रिपोसेस कर रहा है.
and 112 adjusting value of the other two machines against the amount due on 1/1/2009. The machines were valued on the basis of 30% depreciation annually on return down value basis. Y company spent 15,000 on repairs of two repossessed machines and sold one of the machine at 120,000 and 170,000. Show the machinery account, Y company's account in the books of X company, and the machinery repossessed account in the books of Y company. ठीक है, as usual. ठीक है, एंड कहीं भी आपको कुछ डाउट होगा तो यहाँ स्टॉप करके मुझे पूछिए. ठीक है, एंड आई विल बी लुकिंग डाउन एंड राइटिंग. सो अगर आपको कोई डाउट है यू स्पीक टू मी. ठीक है, अनम्यूट करके स्पीक कर. ओके, राइट जी. अभी इन द बुक्स ऑफ हायर परचेज हायर परचेज कौन है? एक्स कंपनी लिमिटेड. एक्स लिमिटेड. मशीनरी अकाउंट उसको दिए ना. दो सौ का एंट्री है, सीखना पड़ा है काफी है. फिर हायर वेंडर. So Y limited upon higher vendor A particulars is and asset account. Okay, yeah, right. Now क्या करना है? First entry. How is the cash price? Cash price is 1,50,000 and three machines are there. So machinery account debit to higher vendor Y limited 1,50,000 into 3. तो ये 4.5 लाख. कौन सा तारीख है? 1/1/2007. 1/1/2007. By machinery account 4.5 लाख. 4,50,000. Right. The next entry is down payment. Down payment, how much he is making? Payment was to be made rupees 90,000 down. So Y limited account debit to bank 90,000. ये है down payment. So on this same date it will be first day of the year, first year. End of the and interest. What is the rate of interest? Interest is depreciation is 20% and the interest rate is my purchase payment was made 90,000. The remaining three equal installments together with interest of 9%. Rate of interest is 9%. Okay, end of the year was depreciation 31st December 2007. 9.
depreciation 20%. So 4,50,000 का 20%. How much is this? 90,000. Interest by interest. 450 का 90,000 डाउन पेमेंट पे कर लिया है. So amount left out is 3,60,000. On that, 9% will be the interest. So it is 32,400. ठीक है. कितना इंस्टॉलमेंट पे कर रहा है? 3,60,000 को they are paying in 3 equal installment. नहीं जी, अलग रखे नहीं, इसी में होगा. अलग अभी नहीं करेंगे, जब अभी नहीं करेंगे. ठीक है, तो अभी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करना है. वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक. 3,60,000 प्रिंसिपल अमाउंट बाकी है, वो 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे कर रहा है. 3,60,000 प्रिंसिपल अमाउंट है, कैश प्राइस है. कैश प्राइस को 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स पे पे कर रहा है. मतलब 3,60,000 डिवाइडेड बाय 3, 1,20,000 प्रिंसिपल अमाउंट है. और प्लस इंटरेस्ट पे करना है. इंटरेस्ट कितना है? 32,400. सो टोटल इंस्टॉलमेंट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है 152,400 31 दिसंबर 2007. तो सारे एंट्री कर लिया, इसको क्लोज कर लीजिए. क्लोज कर लीजिए. फर्स्ट ईयर को 4,82,400 4,82,400. So 2,40,000. The balance carried down 1,12,008. By balance brought down 1,20,000 अभी आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस. राइट, यहाँ बाय बैलेंस कैरिड डाउन 3,60,000. Balance brought down 360,000. 1,12,008. ठीक है. Now due for depreciation secondly. So by depreciation, then depreciation 3,60,000 का 20%. आ जाएगा 72%. By interest 9% है. By interest 31st December 2008 ये 2,40,000. 40,000 का 2,40,000 into 9 by 40,000 into 9% is 21,600. अभी जो हम फॉलो किए वो यहाँ नहीं चलेगा, कैसे है देखिए. तो हो गया 261,600. 261,600. जब भी कोई भी अगर आप किसी से कुछ खरीदना है, पुराना सामान है, तो आप थोड़ा बार्गेन करते हैं. तो जो सेल करता है आपके पास अगर एक बताएगा तो आप बोलते नहीं भाई 1,00,000 नहीं है, क्योंकि अगर 80,000 को आप सेल करेगा तो हम खरीदेंगे. अगर तैयार है तो बताओ. तो हम हमेशा बार्गेन करते हैं. तो यहाँ भी हायर वेंडर बार्गेन करेगा हायर परचेजर के साथ. मैं पूरा रिप्रोसेस करूंगा. अगर पार्शियली रिप्रोसेस करना है तो मैं वैल्यू को कम करके लूंगा. नॉट एट 1,00,000. आई विल बी टेकिंग द एसेट एट 80,000 रुपीज. रिड्यूस थोड़ा डिस्काउंट पूछेगा. तो कैसे पूछेगा? ज्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा. बाय चार्जिंग एक्सेस डेप्रिसिएशन when you get the
अमाउंट, ठीक है। तो हम फाइंड आउट करेंगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द asset at 20% and what is the value of the asset at 30%. We have to find it. Okay. 20% WDV 20%, 20% ही है ना? हाँ, 2007. So cost कितना है? Cost is एक, so 1,50,000, 1,50,000. Depreciation at whatever that है. Depreciation 2007. 40% इसका कितना होगा? 30,000. 50% होगा तो 45,000. 1,2008. Value 1,20,000 and we हो गया 1,05,000. Depreciation for 2008. 120,000 का 20% will be 24,000. So 24,000 का depreciation हो गया. 1,05,000 का 30%. So 41,500. Book value on 31st December 2008. This is the date goods are repossessed. तो कितना हो जाएगा? इसका हो गया है 96,000 and this one is 1,05,000 minus 51,500 is 73,500. Actual value of the asset is 96,000, लेकिन repossess कर रहा है at the discounted value 73,500 bargain कर. ये difference है. This is the loss for the इसको loss for the higher purchase. So loss for higher purchase, loss on repossession. Value of two trucks will be यहाँ 73,500 into 2, यहाँ 96,000 into 2. 96,000 into 2 कितना है? 1,92,000. 73,500 into 2 is 1,47,000. Loss on repossession 1,92,000 minus 1,87,000. ये हो गया है 45,000 इज द लॉस. सो हम क्या करेंगे? कौन सा वैल्यू पे रिपोसेस कर रहा है? दो ट्रक का वैल्यू है 73,500 into 147,000. This is the repossessed value. This is the repossessing value. To machinery account 1,47,000 आ जाएगा by limited account 1,47,000. Loss कितना आ रहा है? Loss is coming. How much is the loss? Loss is 45,000. So profit and loss account debit to asset account by unit account. Loss is 45,000. Okay. देखो 3 मशीन था, 2 मशीन repossessed. 3 मशीन था, 2 मशीन वापस ले लिया. ये एक मशीन अभी हायर परचेसर के पास है. ये एक मशीन हायर परचेसर के पास है. 3 मशीन था, 2 मशीन वापस ले लिया है. 1 मशीन इज लेफ्ट आउट विद हायर परचेसर. तो उसका वैल्यू क्या है? 20% पे उसका वैल्यू क्या है? 96,000.
बुक वैल्यू 20% पे ए का आ रहा है 96,000, है ना, इसका वैल्यू है 96,000 20% पे 31 दिसंबर 2008 ऑन द डेट बुक वैल्यू होना चाहिए 2 साल का डिप्रिसिएशन देने के बाद 96,000 होना चाहिए 20%, भी वो वापस नहीं ले रहा है। सो यू हैव टू राइट हियर बाय बैलेंस, क्योंकि एक एसेट आपके पास है, एक मशीन आपके पास है, बाय बैलेंस कैरी डाउन 96 है ना, 96,000 ये लिखने के बाद ये अकाउंट टैली हो जाता है अपने आप में। सुन लीजिए प्लीज, पे अटेंशन, there were three assets were there, two assets are repossessed at which value 1,47,000, तो हम यहाँ ले लिया 147 147 यहाँ क्रेडिट लिया, यहाँ डेबिट कर लिया, ठीक है, राइट। देन इसका वजह से लॉस कितना है, लॉस इज 45,000 इज द लॉस, हम कैलकुलेट किया। सो 45,000 लॉस है, तो पी एंड अकाउंट डेबिट, आंसर अकाउंट 45,000 लॉस को हम, तो बाकी क्या बचेगा, ये एक मिशन बचेगा, वो तो वापस नहीं लिया है, वो 20% डिप्रिसिएशन पे होगा, तो 20% डिप्रिसिएशन में एक मशीन का वैल्यू है 96,000, उसको यहाँ डालने से ये अकाउंट टैली हो जाएगा। अगर टैली नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं हम कोई गलती किया है, ठीक है, यू कैन चेक इट अप, ठीक है। सो नाउ चेक इट अप, आर यू गेटिंग 3,60,000 दोनों साइड, इस साइड पे आ गया 360,000, उस साइड में भी आना चाहिए 360,000, 72,000 प्लस 147,000 प्लस 45,000 प्लस 96,000 इज 3,60,000, 3,00,000 गेटिंग। बस इसमें जो बैलेंस आएगा वो टू बैलेंस कैरी डाउन करके लिखो, टू बैलेंस कैरी 261,600 61,600 minus 147,000, ये था 14,600, समझ में आ गया। इन द बुक्स ऑफ हायर परचेसर, गेटिंग इट, गेटिंग इट, कोई भी कुछ भी नहीं बोल रहा है, अच्छा ओके राइट। नाउ ये इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, इतना बड़ा कौन लिखेगा, इतना बड़ा तो लिखने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, we don't have time to do इतना बड़ा वर्किंग। सो हाउ टू डू द शॉर्टकट्स, हाउ टू उसका शॉर्टकट पे हम फाइंड आउट करें, तो ये है 2 साल करना है, वी हैव टू डू 2 years, तो क्या करना है, वैल्यू बुक वैल्यू ऑफ मशीन इन द year 2 will be 1,50,000 इंटू 20% डिप्रिसिएशन है, तो बाकी कितना होगा 80% इंटू 0.8 इंटू 0.8 एट 20%, तो बुक वैल्यू आ जाएगा आपका 1,50,000 इंटू 0.8 इंटू 0.8, ये हो गया 96,000, सीधे आ गया। एंड एट 30% 1,50,000 इंटू 0.7, so 150,000 into 0.7, 73,500, इतना बड़ा टाइम वेस्ट करने का जरूरत नहीं है, सीधे आ जाएगा। सो लॉस पर लॉस ऑन रिपोजिशन per machine will be 73,500 minus 96,000, 22,500. We process two machines at 73,500. So 73,500 into 2. And 500 into 2. ये फटाफट हो जाता है,
इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं, सीधे आपको आ जाएगा 2 मिनट पे आ जाएगा ये शॉर्टकट। शॉर्टकट मेथड आप यूज कर लीजिए ताकि आपका जल्दी सब कुछ हो जाएगा। ओके, गेटिंग इट, गेटिंग इट राइट। In the books of hire vendor, we have to make the entries. In the books of hire vendor. Exam पे one of the book they will be asking, they will not ask both the books. But इस problem पे दिया है, हम कर रहे हैं. Otherwise, in the examination, we will ask only one book. In the books of hire vendor, Y limited. Okay. तो कौन सा अकाउंट we have to make it? We have to make 2 accounts. एक है क्या हायर परचेस अकाउंट, दूसरा है गुड्स रिप्रोसेस्ड। Goods reprocessed 8. Okay, 8. So first is higher under, who is the higher under? X limited. X limited account. So the transaction started on 1/1/2007. Sale of asset. Entry will be higher purchaser account debit to higher sales. We started 4 lakh because 1,50,000 cash price था 3 machines के लिए 150,000 into 3 down payment. Bank account debit to higher purchaser account. How much is the down payment? 90,000 is the down payment. 1/1/2007. The balance 3,60,000 will be paid in 3 equal installments. So 360 divided by 3, 120,000 plus interest. The principal amount 120,000 plus interest. Right. End of the year, due for interest. Interest is income for hire vendor, so that is to be credited. Entry will be hire purchase account debit to interest account. 31st December 2007. What is the rate of interest? 7.5% is the rate of interest. Interest is 9%. The first year interest rate is 22,400. So we have 3,60,000 into 9%. 22,400. Payment now you are receiving. Bank account debit to hire purchase account. So by bank 1,20,000 principal amount plus 32,400 interest, total 152,400 by balance carried down 40,000. Four 482,400. The balance brought down 2,40,000. 1,2,008. So to interest
How much? 9% on 2,40,000. 40,000 into 9% is 21,600. पैसा नहीं मिला, but he repossessed the goods. So goods repossessed account debit to hire vendor by goods repossessed account. 31st December 2008. कौन सा वैल्यू पे रिपोसेस किया है? 1,47,000. X limited account 1,47,000 on 31st December 2008. सेकंड को क्लोज कर लीजिए. क्लोज करके बैलेंस कैरी डाउन होगा. टोटल इज 61,600. 61,600. 61,600 minus 1,47,008. 1,14,600 by balance carried down. ये इतना पैसा मिलेगा हायर परचेसर से है. कम टू दिस वन. The assets are being, the asset इसमें दो मशीन्स हैं, इसमें एक मशीन सेल हो रहा है, उसके पहले कुछ खर्चा कर रहा है. क्या एक्सपेंसेस हुआ है? मेल कर रहा है 30% W basis. Y Limited, Y company sent rupees 15,000 on repairs, spent rupees 15,000 on repairs. So goods repossessed account debit to cash account 15,000. डेट हमको मालूम है, पुट द क्वेश्चन मार्क. हो गया. दिस इज फॉर इनकरिंग द एक्सपेंसेस. फिर बाद में इसको सेल कर रहा है. कितने पे सेल कर रहा है? द मशीन वाज सोल्ड फॉर 1,20,000 on 1/7/2009. 1/7/2009 पे by bank. Sale of repossessed machine 1,20,000. कितना मशीन सेल किए? एक मशीन सेल. Let us find out what is the profit on this. Okay. Cost of repossessed machine. Repossessed machines. कितना है? 1,47,000. Add expenses incurred. कितना इनकर गया? 15,000. Total value of machine is 1,62,000. Value of one machine will be 1,62,000 divided by 2. ये हो गया 80,000. Profit on sale of repossessed goods. So 1,20,000 minus 81,000. 120,000 minus 81,000 is 49,000. So to P&L account, profit on sale 39,000. उनके पास कितना मशीन है? अभी एक मशीन बाकी है. उसका वैल्यू कितना होना चाहिए? 81,000 होना चाहिए. सर बाय बैलेंस करेगा और दोनों साइड टैली हो जाएगा. टोटल करके देख लीजिए, दोनों साइड टैली हो जाएगा. ठीक है. So this is the way we have to do this. तो बस इसमें क्या है? 15,000 दो मशीन्स के लिए. टोटल वैल्यू ऑफ द मशीन इज 162,000. So one of the machine is sold, so balances. उसका वैल्यू 81,000. That we have taken as a closing balance. And profit on sale is 1,20,000. The asset is sold. Actual value of the asset is 81,000.
So 39,000 is the profit which will be transferred to profit and loss account. So use 3% account debit to profit and loss account. This is the entry for this. Are you getting this? Any doubt? Any doubt? Clear? Devin, आज तो कुछ भी नहीं बोला है. Is that clear? Devin is not there. Achha. All right. So this is all about hire purchase. So with this we are completing our hire purchase. Please kindly do the partial repossession problems 17, 18 and 20. This is the homework. Homework for you. 17, 18 and 20. These three problems are homework for you. Okay. I'll discuss this problem in the next class and I will forward you also the answers. But please kindly try this. Okay. I'll forward the answers to you in the next class, not this class. I'll share the answers with you. In this class, I don't want to share it. So please kindly do it. So आप concentrate कर लीजिए partial repossession पे ज़्यादा. ठीक है. फर्स्ट प्रॉब्लम्स हमने किया है क्योंकि अगर वो नहीं करने से क्या हो जाता है, प्रॉब्लम होता है. सर प्लीज सारा पीडीएफ. Yes, all the PDF is sent. Complete entire PDF is sent. Okay, right. All the PDF I will send it. Okay. So with this, our hire purchase is over. The next area, what we are going to do is, I'll go with the bills of exchange. That is the next area we are going to do it. Please kindly see the basics of bills of exchange. So I'll straight away start with the advanced problem because we have done it in 11th and so many occasions we have got to do bills of exchange. अगर बताइए कोई बिल्स ऑफ एक्सचेंज बिल्कुल नहीं किया है, कोई है इसमें? Rectification we'll do, Ayyappa. I'm asking anybody has not done at all. Anybody has not done at all bills of exchange? Anybody has not done at all bills of exchange? Wait, I'll take the branch account and department account at the later. ठीक है. अगर करा है तो if you have done it, please once again उसको आप एक बार देके आ जाइए and we will do those things once again. ठीक है. And advanced problem हम जाना है क्योंकि we are left out very less number of classes. So उसमें हम करना है एक ही क्लास में bills of exchange complete करना है. So if you do the basics and coming, then I can go for accommodation of bill and things like that. I can do more problems. क्योंकि problem आएगा सिर्फ accommodation of bill से आता है. अगर basics आपको मालूम नहीं तो accommodation करना थोड़ा difficult हो जाता है. Please kindly आप basics करके आइए तो हम time waste नहीं करेंगे. Accommodation सीधे straight away we can go for accommodation after doing one or two problems. ठीक है. तो ये है मेरा रिक्वेस्ट सबसे. अब ये सब करके आइए. So I'm going to do the bills of exchange in the next class. These are the areas we are going to do bills of exchange. Single entry. Then NPO करना है आएगा पक्का. And we will be doing. Thank you, Ji. Thank you. NPO, then we will be doing branch and department. Last, accounting standards. Accounting standards, you may have to come to my classes, not in the, because इतना class नहीं होगा. So accounting standards ज़्यादा है, उसमें भी 20 मार्क का process आने का chances है.
तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यहाँ क्लास में मैं नहीं कर सकता क्योंकि इतना क्लास वो कंज्यूम करेगा तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा. So I'll give you free class for that. I'll announce and you can join for the classes as a guest. ठीक है, एक संडे बैठेंगे 4-5 घंटे बैठ के we will be completing the accounting standard. ठीक है, I'll get the permission from the institute. If they are allowing on this platform, okay, all right, we'll be sitting here in the WebEx and we'll be doing. And if the institute is not ready to give time in WebEx, okay, right, we'll do my private classes. I'll give you free of cost, so you can join for that. Okay. So end of somewhere middle of November or first week or 10th by 10th before 10th of November we will do our accounting standard. ठीक है. I will inform you well in advance. जो आना चाहता है kindly you can join with me. It's no problem. I will inform you in advance. ठीक है. उसमें accounting standard करेंगे. फिलहाल these are the areas I have planned to do. Rest we'll see it in the next class. Namaste friends. See you. Namaskar. I'm ending the meeting. Okay.